हाय दोस्तों। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि कैसे डिजिटल नोट टेकिंग किया जाए एफिशिएंट प्राइस में, और आप क्या सेटअप यूज़ करते हो ये सब दिखाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, मैं जो सेटअप यूज़ करता हूँ और सेटअप्स यूज़ करता हूँ एक्चुअली, वो सारे सेटअप एक एक करके रिवील करूँगा और इसका प्राइस के बारे में बताऊँगा, क्या क्या आप कहाँ से ख़रीद सकते हो वो सब बताऊँगा, ख़रीदने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं वो बताऊँगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो है वॉकम पेन टैब। एंड वॉकम पेन टैब के साथ में क्या आता है, ये बेसिकली एक बोर्ड आता है जो कि राइटिंग बोर्ड है, और इसके साथ एक पेन आता है जो कि रिचार्ज करने का ज़रूरत नहीं है इसको, और इस ये बैटरी से भी नहीं चलता है। सो दिस इज़ प्रिटी गुड एंड दिस इज़ प्रिटी लाइट, so it's nice to work with. So I'll talk about this particular board, but anyway you can look at this board is just connected with the computer with a USB कनेक्टर, एंड इसका एक ड्राइवर आता है जस्ट आपको डाउनलोड करना है। देन आपको क्वेश्चन पूछना है कि ये लिखता कहाँ से है। सो बेसिकली यू सी देर आर लॉट ऑफ ग्रिड्स यहाँ पे, एंड इसका राइटिंग का जो फीलिंग आता है वो प्रीटी मच पेन एंड पेपर जैसा ही आता है। तो कंप्यूटर में कौन सा एप्लीकेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो बता दूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड एक अच्छा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो आप आसानी से पेन चेंज कर सकते हो और आसानी से लिख सकते हो। ओके, सो इट्स प्रीटी स्मूथ, मतलब कोई लैग नहीं है माइक्रोसॉफ्ट गाइस। तो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए या फिर नोट बनाने के लिए आप जो यूज़ कर सकते हो वो है माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड। ये बहुत ही खास एप्लीकेशन है। आप जस्ट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से आप लॉगिन कर लीजिए तो आपका लॉगिन हो जाएगा और ये वाइट बोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा, और ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में फ्री में मिलता है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो ये सही होगा राइट आपके लिए। तो अभी हम क्या दिखाएंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड को यूज़ कैसे किया जाता है अपने यूज़ के लिए। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू देयर आर लॉट ऑफ ब्रशेस। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ब्रश का जो डिफरेंट टाइप ऑफ थिकनेस है वो यूज़ कर सकते हो, कलर यूज़ कर सकते हो, अलग से कस्टम पेन बना सकते हो, हाइलाइटर्स है, इरेजर है, इवन स्केल भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और दिस इज बेसिकली अ इनफाइनाइट बोर्ड। ओके गाइज, सो व्हाट यू नीड टू डू हियर is basically you write your notes. Okay, write your notes. So writing is pretty fun. Okay, then you add images. So these images might be a cropped version from a book and all of these things. So adding images are also not difficult. So you just have to go to this add option, and here you can add Bing images or image that is present in your computer. So this is good, right? And the best part of these things is like you make your notes, okay? And whenever, don't think this particular screen is very small. So whenever you are done, you can zoom out. So it's a infinite board. So you can really zoom out and write a lot of things in it, and at the end you can export it as a image or a PDF. So that's a good part, right? So for illustrating something or writing notes, this app is very good. Okay, right? So I pretty much like it. I use it as well for my teaching purposes and all. You can also use it for your own purposes. So you can use different brush lines. Okay, anyway, so this is one. And let's say you don't want to use this, you can use what? You can use your PowerPoint, right? That is easier. That is very easier. You can use your PowerPoint, and in the PowerPoint as well, let's say you have a slide, or the slide that is provided to your lectures in your colleges, right? So what you are going to do right now is take a slide, and you can also annotate things there. You can write just like a page. So this particular slide would work like a page. Okay, so you can write in the slide, right? So for example, if I pull up one of my let's say lecture notes, so for example, let's say I pull out
2D gel electrophoresis, one particular note. Okay, so let's say this is provided by your professor, and for example you want to write a particular note in this presentation, right? So you can actually add note with your hands, right? So you can say that, okay, 2D gel electrophoresis is based on two principles, right? And so on and so forth. So you can see the writing is pretty good, right? So it's just like a pen and paper. So I'm writing pretty fast right here. So you can see it's pretty nice. And it really gives you like a pen and paper like feeling. So the pen is fantastic. And that's why I like this setup. It is cost effective, budget friendly for students. And you just need to have an add-on, this particular board, which is 4,000 rupees. And the link is given in the description. So don't forget to check out. The Amazon link is there. You can rapidly order from Amazon. It would be in your doorsteps. And it's easy to configure. You don't need to buy any other software to do all of these things. In simple word, it is superb. I really like this app because you can annotate your slide. Whatever slide you can have from your teachers, you can annotate that slide like you want, right? For example, you can just, let's say you want to add a point here and draw some arrow and write something about it. So you can really do that, which is wow, right? But otherwise you really have to go and type some things. Some people prefer that, but I prefer that handwriting bit, and it really helps me to remember things and connect the dots. So this is one of the setup that I use, and I really like it. About the budget, about the price, everything I would quote in the description. You can directly get it, and it's, what should I say, it's a poor man's digital note taking tool, and also it's budget friendly. It's very, very good, and the feeling of writing on this board, it's amazing. It doesn't even take space. It is very compact. So it's great. So I'll also do an unboxing video if you like it. So I'll do an unboxing video, guys. Okay. Thank you. Thanks for listening. So you can keep these things. So it would be annotated right now.